My voice is audible. So which formula we can use for calculate void ratio? Compression index equal to what? Cc equal to daily by log distance sigma 2 by sigma. daily by log 10 sigma 2 by sigma naught. Okay, this is correct. So put the value Cc. Cc is given how much? कितना दिया हुआ है? 0.28. 0.28. Okay. So right here 0.28. Del sigma is not known. Sigma 2 is given. How much? Sigma 2 is given or not? 21.6 plus 12. 21.6 divided by sigma 1. Sigma 1 is given, that is 12. Ma'am 26.1 plus 12. 12 ma'am. 21.12 होगा. मैम 33.6 होगा मैम ऊपर में. 33.6 yes ma'am. क्या होता है फॉर्मूला? चेक अगेन. फॉर्मूला क्या होता है? मैम वो फाइनल स्ट्रेस होगा तो 21.6 प्लस 12 को ऐड करेंगे तो वही. क्यों होगा? क्वेश्चन में क्या दिया है? If a stress is increased by नहीं दिया, increase to 21.6, that means final stress is 21.6. ये डेल सिग्मा का वैल्यू नहीं. सिग्मा 2 is given 21.6. This is not डेल सिग्मा. अगर डेल सिग्मा होता तब हम लोग ऐड करते 12 प्लस डेल सिग्मा. समझ में आया? Calculate void ratio if a stress is increased to 21.6. मतलब 21.6 अभी हो गया, इंक्रीज होके हो गया. डिफरेंस इज नॉट गिवन. So take anti-log and calculate del E. तो del E का वैल्यू कितना है बताओ? 0.0714. 0.0714. Yes ma'am. सबका आ रहा है इतना वैल्यू? यस मैम. एंड दिस 21.6 को हम लोग लिख सकते हैं डेल सिग्मा, here sigma 1 plus del sigma equal to 21.6. यहाँ से हम लोग डेल सिग्मा को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 21.6 minus 12. ओके, सो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है वैल्यू. Nine 9.6 ma'am. 9.61. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? टू फाइंड द सेटलमेंट इन एबव केस इफ सॉइल स्ट्रैटम इज 6 मीटर थिक. सो H naught is given. H naught is 6 meter. Okay, and other variable is also given. So calculate settlement. Cc is given and void ratio and H naught is given. So which formula we can apply for calculation of settlement, primary settlement?
Then H naught into CC by 1 by E. मैम वो वाला लेना। HCC बाई 1 प्लस ई नॉट पे ऊपर पे log बेस 10 फिर ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस डेल सिग्मा बाई सिग्मा 1। Okay, so calculate value. जीरो 0.40। First, we have to check E naught is given or not. E naught given है क्या? What is E naught in formula? 1 plus E naught. So what is E naught? E naught क्या है? E naught is the initial void ratio before settlement start. Before any consolidation settlement. मतलब E naught ऐसा initial void ratio है जब कोई भी तरह का लोड है जो अप्लाई नहीं किया गया था। Is this given in question? E naught is given in question or not? E naught दिया है क्या? E दिया हुआ मैम, E नॉट नहीं। E naught नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? E naught का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? How we calculate? So we have already studied the CC. What is CC? CC is the compression index and some empirical relation also used for the calculation of CC. So one formula is used, that is 0.54 into E naught minus 0.35. Okay, this formula is discussed. So CC value is given 0.28. CC value is how much? 0.28. So from this relation, we can find the initial void ratio. So first calculate initial void ratio. Then we apply settlement formula. So calculate E naught. And this E naught value is put in the formula. So for settlement, we use the formula CC H naught divided by 1 plus E naught into log 10 del sigma plus sigma naught divided by sigma naught. By this formula, we can find settlement. 0.86 E naught 0.868. 0.868 E naught value. Then find settlement. How much FC?
Ma'am, 0.229. Yes, ma'am. 0.229. Which unit? What is unit? 0.229. यूनिट क्या है सेटलमेंट का? मीटर. That means 22.9 सेंटीमीटर. सो अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे 21.6, देन सेटलमेंट इज इतना सेंटीमीटर, 22.9 सेंटीमीटर का सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब हाइट रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर है? सो हमें फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला में जो भी वेरिएबल्स है उसका क्या वैल्यू होगा, उस वैल्यू का क्या मीनिंग है, ये भी हमें ध्यान रखना है. सिग्मा नॉट इज द इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, डेल सिग्मा इज द इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, and del sigma plus sigma naught is the final stress, and E naught is the initial void ratio before the consolidation start, before the settlement start. Okay, Cc is the compression index. So compression index we can calculate by three empirical formula. Okay, on basis of E naught, on the basis of liquid limit, there are three empirical formula for calculation of Cc. If Cc is given, then no problem, we can use this formula for settlement calculation. And if AB is given, if MV is given, then we can use different formula for calculation of settlement, that is that related to AB or MV, coefficient of compressibility and coefficient of volume change. क्लियर है? सो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 to 4 फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी सेटलमेंट. दिस सेटलमेंट इज प्राइमरी सेटलमेंट, नॉट सेकेंडरी सेटलमेंट. क्लियर? सो सॉल्व अगेन अ क्वेश्चन ऑन सेटलमेंट. तो सीसी का यूज समझ में आ गया. अभी हम लोग एबी और एमबी का देखते हैं, कुछ है क्वेश्चन. Okay, so write a question. A clay soil. Also check which type of soil, sandy soil or clay soil. Okay. A clay soil tested in consolidometer show a decrease in void ratio from 1.82 to 1.51. Okay, this one is E naught and this one is E. When the pressure was increased from 145 to 220 kilonewton per meter square. Calculate the coefficient of compressibility. Calculate the coefficient of compressibility and coefficient of volume compressibility. Coefficient of volume compressibility if the sample tested at site was taken as a clay layer of 4.5 meter thickness. Determine the consolidation settlement resulting from the given stress increment. Determine the consolidation settlement resulting from the given stress increment. So here given, this is not, we cannot say E naught. This is the E1 and this is the E2. Okay. So what is the del E and del sigma? We can calculate, then find AB, then find MV, then find CC. Not CC, we find the final answer, that is the SC.
So calculate. So what is AV? We can use formula AP and MV. मैम नहीं हो पा रहा ये वाला क्वेश्चन। So we can calculate AV by simple formula del E by del sigma. So del E and del sigma we can find from here and here. So what is del E? Del E equal to 1 by minus 1.51 and del sigma equal to 220 minus 145. Put here. Similarly, we can use the 0.0038. 0.0038. Okay. And MV? मैम ई नॉट कैसे निकालेंगे? एमवी के लिए ई नॉट चाहिए, ई नॉट कैसे? MV equal to AV divided by 1 plus E naught. So in this formula, MV क्या है? MV is the slope. So this E naught we can use as first void ratio at first state sigma 1.
तो ये ई नॉट का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1.809 जो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज द इम्पेरिकल, मतलब ये फॉर्मूला है जो कि हमने कैलकुलेट किया है कैसे, वॉल्यूम चेंज। सो वॉल्यूम चेंज किस कंडीशन में हो रहा है, फ्रॉम स्ट्रेस सिग्मा 1 टू सिग्मा 2। सो फ्रॉम सिग्मा 1 void ratio is E1, we can say E1, first void ratio at sigma 1 and sigma 2 void ratio E2, एंड उसके बीच उसके डिफरेंस की वजह से जो वॉल्यूम चेंज हुआ है उसका कोफिशिएंट हम लोग mv कैलकुलेट कर रहे हैं। सो at this point E naught we can write as taken as 1.82, that is given in question, E1 value, initial value of void ratio. So AB equal to del E by del sigma var. So del E का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.31, and what is del sigma, 220 minus 145, how much, 75. So what is the value of AB, how much, कितना आ रहा है वैल्यू, 0.0041. 0.004, यही है। Yes, ma'am. So we can write this value into 4 into 10 to the power minus 3. So mv equal to what, mv equal to av divided by 1 plus E naught. What is av, av equal to 4 into 10 to the power minus 3 divided by 1 plus E naught. E naught first हमारा void ratio कितना दिया हुआ है, 1.82. So find this value, then we can find settlement. So settlement we can find in terms of AV or in terms of MV. So what is the formula? MV is equal to 1.46 into 10 to the power minus 3, ma'am. 10 to the power HMV del minus sigma 3. bar. So formula is H naught mv into del sigma var. So all value is given. H naught how much? H naught is given, that is 4.5. mv is calculated 1.46 into 10 to the power minus 3, and del sigma is also calculated how much? Del sigma, that is 75. So calculate, find the value. Ma'am, 0.494. 0.494 या 54. No, ma'am, 0.494. 0.494. Is it correct? Yes, ma'am. 0.492 आ रहा मेरा. 492, 494. Okay, then correct. So this is the settlement. Now you can solve a different question on the basis of this formula. अभी समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है सेटलमेंट का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next topic in this chapter is to find time rate of consolidation.
So consolidation theory is given by Tarjaghi. So there are some assumptions in this theory. So assumption of Tarjaghi theory is of one-dimensional consolidation. So first assumption is similar, that is the जो हम लोग सारे चैप्टर में पढ़ते हैं सबका assumption होता है, that is the soil is homogeneous and isotropic. Soil is homogeneous and isotropic. Okay, this is the first assumption. Second assumption is the soil is fully saturated and flow of the water below the within the pores is laminar flow. So if flow is laminar, that means we can use for the analysis Torsilla. If flow is not laminar, then which theory we can use for analysis of flow? क्या यूज करते हैं अगर फ्लो लैमिनार ना हुआ तो? बहुत बार बताया गया है क्लास में, अगर फ्लो लैमिनार नहीं हुआ, zigzag फ्लो हुआ, टर्बुलेंट फ्लो हुआ, देन एनालिसिस ऑन विच थ्योरी? एनालिसिस हम लोग किस थ्योरी पे बेस्ड करते हैं? कुछ याद आ रहा है? कोई लैपलेस थ्योरी कोई बताया गया था सॉइल एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज में भी, जब हम लोग सीपेज एनालिसिस पढ़ रहे थे? So if flow is not laminar, then we use Laplace theory for the analysis of flow within the soil. So second assumption is soil is fully saturated and flow is laminar. So flow is laminar, then we can use Dorsey law. Third assumption is the soil remains saturated during the process of consolidation. So this term saturated is very important for consolidation. ठीक है? So saturated कैसे हो जा रहा है? So before consolidation compaction is occurs. Before consolidation compaction होता है, तो compaction में हम लोग क्या करते हैं? एयर को पहले ही रिमूव कर देते हैं. जब सॉइल में से एयर रिमूव हो जाएगा, देन सॉइल विल बी फुल्ली सैचुरेटेड. क्यों? सॉइल हमारा टू फेज में आ जाएगा. एयर ऑलरेडी रिमूव ड्यू टू कॉम्पैक्शन, ड्यू टू लोड एक्टिंग. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी लोड हम लोग ये करते हैं, सॉइल पे लोड एक्ट करते हैं, तो हमारा कॉम्पैक्शन प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है. देन कंसोलिडेशन स्टार्ट. सो बिफोर आफ्टर कॉम्पैक्शन completed and before consolidation, the soil isn't fully saturated. Okay, so third assumption is the soil is saturated during the process of consolidation. So during the process of consolidation also soil remains saturated. Okay, soil remains saturated. Maybe थोड़ा slowly हमारा ये soil क्या हो जाएगा? पार्शियली सैचुरेटेड होगा, क्योंकि हमारा सॉइल से धीरे धीरे पानी है जो ड्रेन आउट हो रहा है. फोर्थ assumption is the strain produced due to a stress applied is very small. That means there is no change in soil structure. So in consolidation process, throughout the consolidation process, there is no change in soil structure. The flow is essentially one-dimensional and no change in area cross-section occurs. And also the hydrodynamic lag is considered
while plastic lag is ignored. That means the ये हम लोग कब यूज करेंगे कि हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसीडर्ड व्हाइल प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड. दैट मीन्स प्लास्टिक लैग तो हम लोग सेकेंडरी कंसिडरेशन में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना. सो दिस assumption इज ओनली फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, नॉट फॉर सेकेंडरी कंसोलिडेशन. So what do you mean by dynamic hydrodynamic lag? इसका मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक लैग चलो समझ में आया, लेकिन ये हाइड्रोडायनेमिक लैग का क्या मतलब है? हाइड्रोडायनेमिक लैग क्या होता है? हाइड्रोडायनेमिक लैग, हाइड्रोडायनेमिक लैग, हाइड्रोडायनेमिक term is used in fluid mechanics. So this term is used for the drain out of water at very slow rate. मतलब जो लैग हो रहा है, हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसीडर्ड, दैट मीन्स ड्रेन ऑफ वाटर इज कंसीडर्ड एट वेरी स्लो रेट. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this process, this consolidation process is time dependent process. हमारा ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है. So Tarzaghi obtained the equation for one dimensional consolidation is, that relation is del u by del t equal to Cv into del square by u del z square. This equation is used by Tarzaghi for analysis of one dimensional consolidation where u is axis pore water pressure which is developed due to applied effective stress. What is u? U is u is pore water pressure Pour water. that is developed due to applied effective stress. And del u by del t, what is it represent? Del u by del t, u is the pore water pressure. So del u by del t represents rate of change of pore water pressure. ओके, किसी भी चीज का जैसे dv by dt, dv by dt क्या शो करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सिमिलरली del u by del t रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर प्रेशर. ओके, एंड cv, what is cv? cv is the coefficient of consolidation. cv is coefficient of consolidation. Okay, coefficient of consolidation which depends upon type of soil and it determined by rate of consolidation. So rate of consolidation के accordingly हम लोग CV को calculate करते हैं. So this terminology is clear. Then CV को हम लोग लिखेंगे CV equal to K divided by gamma W into mv. So cv is what? cv is coefficient of consolidation and it depends on rate of consolidation. So see the formula, cv equal to k divided by gamma w into mv. K represent permeability, gamma w unit weight of water and mv is the coefficient of volume change. ठीक है? So if CV depend on soil, types of soil, and also it determine the rate of consolidation. That means rate of consolidation किस factor पे depend करता था? आज की क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी. So rate of consolidation depends on permeability of soil, load applied, types of soil,
Okay, and also how much volume change that is the depth change पे भी depend करता था. So here also in formula we can see K is also used, gamma W that is the unit weight of water, and MV is also used for the calculation of CV. So please remember this formula. This CV formula is very important. CV equal to K divided by gamma W MV, and we can also modify this formula in terms of K, that is K equal to CV MV gamma W. CV MV gamma W, K equal to permeability and coefficient of permeability, and this can also represent as K MV gamma W. Okay, and CV represents rate of consolidation and also rate of settlement. And the unit of CV क्या unit होगा, थोड़ा calculate करके बताना. Unit of CV मीटर स्क्वायर पर सेकंड. meter स्क्वायर पर सेकंड. meter square per second. Clear है? Meter square per second. Okay. So this point is clear. Next is the to find height of settlement, that is the drainage path, and also time factor.